Hello students, welcome to Oliveboard. I'm your faculty Rahul Yaduka. Uh, I welcome all of you again for our uh, weekly Wednesday classes at 8 p.m. And as we are progressing, this is our 23rd session in a row. Every week we have taken one session. And uh, in the beginning, up to 15, 16 sessions, I engaged with current affairs primarily. And we also tried to see how we can frame out certain questions around recent developments and how to answer them. In last 5 6 classes I talked about some pertinent topics of Indian polity, and I also took one class on Indian social movement. So still there are a couple of topics which I will be covering which are not related to economy or polity. They are related to Indian society in general, but today I thought why not we can recap a bit more about certain outstanding topics of Indian economy through question and answer, right? So this is what we are going to do today. We'll take up 3 4 questions very quickly because content I hope is prepared for all of you. You must have revised, you must have read all the major topics of the syllabus, and since I've been taking you through Q&A also, so I think that is also something which you are familiar with. So uh, the first question that I want to discuss today is about sectoral contribution of different sectors in an economy, right? So you know that uh, primarily there are four sectors of Indian economy. It's agriculture, industry, service sector, and then we have certain new sectors which are called quaternary sectors, in which decision making, strategies, etc. come. But the major debate is between agriculture, industry, and service sector. What is the sectoral composition of Indian economy? Which means how much of GDP contribution comes from each sector, right? So the question which is generally asked, a jobless growth is a very important concept after 1991. So in that uh, backdrop, this question has been formulated that though industry has been playing an important role in an economy, still the contribution of agriculture in the development of Indian economy cannot be denied. Discuss the steps to be taken to revitalize the agriculture sector. So there are three major parts if you look at this question. First, it says that industry play an important role. Now it is said, but in the answer, it will be expected that you write certain things, certain facts, certain examples through which you can corroborate this. That yes, industry has been playing an important role. Now, how do you do it? The best ways to do it is to show a trend, as in you can start from 1950 to 2023, and you can show how the GDP contribution of industry in Indian economy has been changing with time. So that is one way of establishing, or you can also show how more population of working age is engaged in industry. So there are two ways to establish the significance of industry in Indian economy. Second part after comma is the role of agriculture cannot be denied. So why it cannot be denied? That is one part, right? So for that you have to show that as industry's contribution has been increasing, there is a perceptible decline in agricultural sector. Again, how can you show that? You can show that by showing that more and more people are engaging into agriculture but lesser contribution to GDP is coming, right? Or agriculture's output ratio is declining, or productivity in agriculture is declining, something of that sort. Or you can also show how percentage of or proportion of big farmers is declining. More and more farmers are coming from uh, marginalized sections. I mean, who have very small land holding. So something of that sort you have to establish, and then you will write why agriculture cannot be denied. So for that, one data is very important, that around 50% of our population is indulged into agriculture, but it contributes around 15% to GDP. So it means there is a lot of disguised unemployment.
So you can link with these concepts also कि we have more people but less contribution. So इसका मतलब है कि there is inefficiency embedded into agriculture. Whatever population is engaging into agriculture, so that is not reflected into the productivity growth. So that you have to do. And third important part of your answer should be what steps can be taken to revitalize the agricultural sector. So in the hints that is in this slide that is visible to all of you, this is the flow of the content. So you have to write in this order, preferably, right? The first, establish significance of industries with data, of course. Second, show a perceptible decline in agriculture and establish its importance, again with data and arguments. And then final part should be how to revitalize the agricultural sector. So you must have having all your points, but these are certain points that you can refer to that uh, supply for raw materials of agro-based industries. Because when you show that agriculture is significant or why we need to focus on agriculture, 3-4 points you have to write. That employment generation capacity of agriculture is more, right? Also, it is not just yet another employment. It is also related to food security of India. And food security is threatened not because of decline in agriculture only, but also because of climate change. So we have to not only strengthen agriculture, but we have to make it climate resilient also, because we cannot surrender our food security to some foreign nation. We cannot import so much of food grain. And even if we have financial capability to do it, the point is also related with strategic security of India, right? We don't want some country to arm twist us that you don't have sufficient food grains, because all of you, I think, remember the case of PL 480, Public Law 480, when US was giving us maize, wheat, rice, etc. So the kind of national humiliation that Indira Gandhi had to face when she was visiting US, so that also goes into formulation of national policies, right? So this is how you have to establish its importance. And then when you talk about steps to be taken to revitalize agriculture, there are two components to it. One is what state has been doing already. So you can talk about Pradhan Mantri Annadata Aay Suraksha Abhiyan, Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, or some interventions like extension services like Soil Health Card Scheme or ENAM. Different schemes are there, you are well versed with it. So write 3-4 important, and also you can suggest on your own part. But the point to be taken note is that when you write that this should be done, it's always preferable that you bank upon certain reports. For instance, you can say Niti Ayog in this report has recommended this, or Ashok Gulati, famous agricultural economist or scientist, had said this. Amartya Sen had said this. FAO of global institution is saying this. So something of that sort, because it adds credibility to your point, right? So this is broadly about this question. Second important question is related to RBI. Discuss various tools used by the Reserve Bank of India in controlling the inflation, right? So, first of all, you must understand that this question is about inflation. So it's obvious that you should introduce in the first paragraph itself what is inflation. So give a very simple, uh, technical and understandable definition of inflation, right? It's always better to start your introduction with some catching remark. For instance, you can say that there is a persistent increase in inflation in last couple of years. कोई डेटा ऐसा आपके पास हो, you can cite that. और कुछ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कुछ कह दिया, IMF ने कुछ कहा इन्फ्लेशन पे, something of that sort. You can strike chord with the evaluator that you are keeping a tab on the issue of inflation, right? Second, you have to establish its problems. Why inflation is beyond a point is not healthy. So its demerits you have to discuss. How it
influences or impacts our economy. Then you have to discuss certain figures related to inflation that some committee of government of India in past has said that food का जो inflation है that should be within this bracket or wholesale inflation price index should be within this bracket. इस तरह का कुछ you can mention, right? And then you can say about RBI briefly that it is bankers of the banks or ultimate bailing out in the final resort, anything, some nice phrase about RBI you can say. And then you can discuss explicitly some tools which RBI uses time to time to maintain and regulate the flow of money in the economy, right? So this is a table for your reference. CRR, then you have SLR, statutory liquidity ratio, repo rate, reverse repo rate, marginal standing facility, MSF, bank rate, and open market operations, OMO. So you can briefly talk about these things, how you can again regarding presentation, because you cannot explain all this. So sometimes you may have to rely upon some graphical representation. So maybe you can use a table, or you can write in bullet format. You can show CRR को अगर इन्फ्लेशन को करना है तो बढ़ाना पड़ेगा, अगर इन्फ्लेशन बढ़ाना है क्योंकि एक पॉइंट के बाद अगर डिफ्लेशन होता है इकोनॉमी में then that is also not healthy. So how these indicators are played with or tweaked, तो थोड़ा सा you can discuss this briefly. That will help you talk about these toolkits that RBI has in its repository to take care of inflation. You can also write about this monetary policy regime which has come. It talks about inflation कितना होना चाहिए and what all RBI has to do regarding this. You can also briefly talk about a general impact of inflation on the economy, and particularly with focus on weaker section of society, because it is also important how you visualize this economic data with respect to society, and it is appreciated often if there is a tone in your answer that you are concerned about weaker section of the society, right? So don't keep it very dry, and try also to talk about how inflation translates into food insecurity or the kind of problems that poor people face generally, right? So this should be the broader contour of your answer. Third is about child labor. So child labor deprives children of their right to go to school and reinforces intergenerational cycle of poverty. Comment, right? So it's slightly condensed kind of statement. So spend let's say 30 seconds to read the question, and as I've been guiding all of you that you should underline key words in your answer to see कि question का framing क्या है, what it is expecting from the students, because don't start writing an essay on child labor, because that's the problem that students face when they don't understand the demand precisely. So the precision in answering can come only if you read the question very carefully, right? So this question is about child labor's implications. Why is child labor problematic? It is saying two things. One, एक तो वो स्कूल जाने से बच्चों को वंचित करता है, एंड सेकेंड जो पॉवर्टी के साइकिल में हमारा जो सेगमेंट फंसा हुआ है समाज, उसको इंटरजेनरेशनल फीचर बना देता है कि एक जनरेशन गरीब है इसलिए दूसरा जनरेशन भी फिर गरीब है. उस दुष्चक्र से बाहर निकलने का, उस विशियस साइकिल से बाहर निकलने का मौका नहीं देता है, राइट? सो हाउ टू गो अबाउट दिस क्वेश्चन? फर्स्ट ऑफ ऑल you have to introduce the malaise of child labor. क्या है? तो इसमें आपको जाहिर बात है चाइल्ड का डिफिनेशन देना होगा कि चाइल्ड लेबर किसे कहते हैं और ये किस एज ग्रुप में आता है. If there is some legislation which prohibits it, if there is some article of constitution which prohibits child labor, you can mention.
If there is some Supreme Court judgment which talks about child labor, you can mention that, and then you can give some relevant data कि इसका scale कितना ज़्यादा है. So there are people who have got Nobel Prize जो child labor पर लड़ने के लिए काम की है जिन्होंने. So you can mention their name and you can mention their statement. उन्होंने क्या बताया है. और अगर कोई मिनिस्ट्री है सरकार की, कोई अथॉरिटी सरकार ने बनाई है, कमीशन बनाया है चिल्ड्रन चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन पे, उन्होंने कोई डेटा रिलीज किया कि लेट्स से उन्होंने कहा कि 40% ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया आर अंडर बॉन्डेड लेबर लाइक कंडीशन, तो यू कैन मेंशन दैट इन द इंट्रोडक्शन, राइट. उसके बाद यू हैव टू एनालाइज इट अ बिट कि चाइल्ड लेबर आखिर आता कहाँ से है. व्हाट आर द कॉजेज ऑफ चाइल्ड लेबर, व्हाट आर डिफरेंट पॉसिबल socio-economic, cultural reasons because of which certain children in our society are condemned to work as laborers. ठीक है. उसके बाद you come to discuss implications. So when you discuss the implications, you can discuss a general implication also very briefly, but always focus more on that part which is asked in the question. So question gives you two things: right to go to school and इंटरजेनरेशनल साइकिल ऑफ पॉवर्टी. सो ये दोनों आपके आंसर में उभर के सामने आना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए दैट यू टॉक अबाउट बैड ramifications of child labor but you don't focus adequately on those two things. That is not expected. ठीक है. रिमेंबर पहली क्लास से हम डिस्कस कर रहे हैं इम्प्लिसिट डिमांड, एक्सप्लिसिट डिमांड. तो जनरल कमेंट ऑन चाइल्ड लेबर इज एक्सप्लिसिट नहीं है, वो इम्प्लिसिट डिमांड है, छुपा हुआ डिमांड है. एक्सप्लिसिट जो है उस पर आपको ज्यादा वर्ड, ज्यादा स्पेस, ज्यादा टाइम देना है. ठीक है. एंड लास्ट में जो काम कर रहे हैं, बिकॉज सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में बात करना एडवाइजेबल नहीं है, यू शुड ऑल्सो टॉक अबाउट वे आउट ऑफ इट. क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं. तो जो स्कीम सरकार ने बनाई है, जो पॉलिसीज सरकार ने बनाई है, जो कानून सरकार ने बनाए हैं, यू कैन टॉक अबाउट दैट. यू कैन मेंशन सर्टेन एनजीओज ऑल्सो हु आर वर्किंग इन दिस एरिया. Next is, in the present context of the need to balance between economic growth and social development, can the public sector lending as a concept and a practice be reprioritized? तो फिर से ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा it demands patience in reading and then you have to answer. Don't start writing. As I've been always telling you, that if you start in haste, just reading the main word and start writing, ज्यादातर केसेस में क्या होगा, you will be writing a generic kind of answer. And please keep this in mind, एक generic answer आपको मार्क्स नहीं ला कर देगा. It is always advisable, it is suitable कि आप जो डिमांड है उसके बारे में सारे एस्पेक्ट को केटर करें, rather than कोई एक एस्पेक्ट पकड़ के आपने पूरा ऐसे लिख दिया. ठीक है. So make it a thumb rule. तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये डिबेट है. चैप्टर 1 में आपने इंडियन इकोनॉमी जब पढ़ा होगा तो था कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस है जरूरी नहीं कि वो सोशल डेवलपमेंट में भी रिफ्लेक्ट करे. ठीक है. तो एक बैलेंस बनाने की जरूरत है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ के बिना सोशल डेवलपमेंट भी नहीं हो सकता, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ सोशल डेवलपमेंट नहीं करवा पाता है वो भी हमारे लिए किसी काम का नहीं है. इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि एक बैलेंस हो. ठीक है. नाउ पहले तो आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है और सोशल डेवलपमेंट क्या है. फिर दोनों में टसल क्या है, कि कभी कभी साथ नहीं होते हैं दोनों. तो यू हैव टू मेंशन सर्टेन डेटा कि इस बीच इंडिया का जीडीपी इतना बढ़ा, व्हिच इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, बट हेल्थ एंड एजुकेशन में जो इन्वेस्टमेंट है या हमारे अटेनमेंट्स हैं, आउटकम्स हैं, वो घटे. इससे ये एस्टैब्लिश हो जाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होने से सोशल डेवलपमेंट हो ये जरूरी नहीं है. सरकार की जो रीडिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिसी है कि सरकार बजट कैसा बना रही है, टैक्स किससे ले रही है, किस क्लास का टैक्स कम किया जा रहा है, जो सरकार टैक्स ले रही है वेलफेयरिज्म पे उसको कैसे खर्च कर रही है, क्या वेलफेयरिज्म पे बजट कट किया जा रहा है. So when you look at the budget of the last year, all this data is discussed.
immediately the next day in Hindu or Indian Express or any significant newspaper. So सोशल सेक्टर में क्या हो रहा है वो बताते हैं एनालिस्ट कर लोग कि सरकार ने मनरेगा पर कितना फंड घटा दिया, या विमेन एंड चाइल्ड पर कितना फंड कट किया, एजुकेशन में क्या बढ़ाया है घटाया, इस तरह की कुछ चीजें यू कैन मेंशन। इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि आप ऐसी परिस्थिति में जब इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल डेवलपमेंट को बैलेंस करना है, सो यू हैव एन नंबर ऑफ टूल्स लेट्स से, बट पीएसएल का क्या रोल हो सकता है? कैन पब्लिक सेक्टर लेंडिंग हेल्प in this context, right? So that is something you have to explain. So introduce what is priority sector lending, ठीक है? And then you have to discuss benefits of allocating priority sector lending to social sector. Priority sector lending क्या है? I'm not going to discuss it in detail. Banking के chapter में you can go and revise कि ऐसा बैंक्स को आरबीआई निर्देश देता है कि लेट्स से आप 100 रुपया दे रहे हैं लोन पब्लिक, उसमें आपको ये 40 रुपए या 30 रुपए इन पर्टिकुलर सेक्टर्स को देना है ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस, इसीलिए उसको कहा गया पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। कि लेट्स से यू आर गिविंग 100 रुपीज, सो 20 यू मस्ट गिव टू फार्मर्स, 10 यू मस्ट गिव टू एमएसएमई, सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो इससे क्या होता है, यू हैव टू डिस्कस बेनिफिट्स कि उन सेक्टर को पैसा जा रहा है। नाउ ट्राई टू लिंक दिस विद लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन कि एग्रीकल्चर में अगर हम इनपुट देते हैं तो हर सेक्टर के ग्रोथ का एक पॉवर्टी एलिविएशन रेशियो होता है कि अगर सर्विस सेक्टर में ग्रोथ है तो वो कितनी पॉवर्टी कम कर रहा है, और एग्रीकल्चर में अगर ग्रोथ है तो वो कितनी पॉवर्टी कम कर रहा है। तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट भी कहते हैं बहुत बार, कि अगर एग्रीकल्चर में ग्रोथ होगा तो वहां रिडिस्ट्रीब्यूटिव कैपेसिटी पैसे की ज्यादा है, क्योंकि एग्रीकल्चर पर कौन डिपेंडेंट है? जो गरीब लोग हैं, जो मार्जिनलाइज सेक्शन से हैं। लेकिन अगर बैंगलोर के कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर आप प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग दे रहे हैं, उसका जो रेमिफिकेशन है वो किन लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा? जिसके पास साल के 50 लाख आ रहे हैं उसको 60 लाख आया, और जिसको कुछ नहीं आ रहा उसको 10 लाख आया। सो ग्रोथ कहां पर ज्यादा है, डेल्टा कहां पर ज्यादा है, चेंज कितना ज्यादा है? सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, कि आप जब उन सेक्टर्स में पैसा चैनलाइज करते हैं, पब्लिक मनी थ्रू बैंक्स, लोन्स के थ्रू, इंसेंटिव्स के थ्रू, सब्सिडीज के थ्रू, तो उसका पॉवर्टी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है? डिस्कस दैट। एंड देन जब भी ऐसी प्रॉमिसिंग कोई बात आप करते हैं, यू मस्ट ऑल्सो टॉक अबाउट सर्टेन चैलेंजेस कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की चैलेंज क्या है। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि बैंक्स के अंदर रिलक्टेंस होता है कि अब हम ऐसे सेक्टर को पैसा दे रहे हैं, फिर आप ये कहते हैं कि उसको इंटरेस्ट भी उनसे कम लो, फिर उसकी कोई गारंटी भी नहीं है कि वो चुका पाएंगे कि नहीं, क्रॉप फेलियर हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, कोई भी चीजें हैं, किसान नहीं चुका पाते हैं तो सुसाइड बहुत बढ़ा हुआ है, आपने देखा होगा ये सारी चीजें विदर्भ के कॉन्टेक्स्ट में। सो ऑल ऑफ दीज आर चैलेंजेस। तो फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स जो इंडिया में हैं, वो अपना पोर्टफोलियो भी ठीक रखना चाहेंगे कि आप, क्योंकि वो जो पैसा दे रहे हैं वो पैसा किसका है? वो पब्लिक का पैसा है। छोटी छोटी सेविंग लोग करते हैं, मिडिल क्लास के लोग, वो पैसा उसमें डालते हैं, और बैंक अगर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग दिया और वो पैसा वापस नहीं आया तो बैंक कोलैप्स कर सकता है। अब इसकी मार किस पर पड़ेगी? तो इस तरह के चैलेंजेस होते हैं। तो यू कैन डिस्कस ऑल दैट एंड देन यू कैन डिस्कस वे फॉरवर्ड कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को बेहतर कैसे बनाया जाए, कि उस पर देना भी है पैसा, लेकिन उसके ऊपर क्या स्ट्रक्चर्स और मैकेनिज्म्स बनाए जाएं कि वहां से पैसा आ सके वापस। नेक्स्ट इज financial inclusion is an essential tool in pursuit of social justice. Financial inclusion is an essential tool in pursuit of social justice. So in light of the given statement, examine the role of digital technology in furthering the case of financial inclusion. तो आपको पहले तो सोशल जस्टिस को इंट्रोड्यूस करना है। इतनी बात आपको समझ आ रही होगी अब कि पहले ये स्टेटमेंट में दो कीवर्ड है, फाइनेंशियल इंक्लूजन और सोशल जस्टिस। तो 30 वर्ड का दोनों का इंट्रोडक्शन आप लिख दें पहले, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, सोशल जस्टिस क्या है। उसके बाद यू कैन टॉक अबाउट गवर्नमेंट्स एम्फेसिस ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन, सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। पहले लोन मेला हुआ करता था, अभी जैम ट्रिनिटी है, ठीक है, जनधन है, आधार, मोबाइल ट्रिनिटी, कि लोगों को कैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के नेटवर्क में लाया जाए
ताकि उनकी फंडिंग को मोबिलाइज किया जा सके देश की ग्रोथ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, और उनको भी वाजिब इंटरेस्ट मिल सके. एंड देन यू हैव टू टॉक अबाउट स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजी, कि फाइनेंशियल इंक्लूजन लाने में डिजिटल टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, राइट? तो यू नो दैट बहुत जगह बैंक्स नहीं है. बैंक्स अगेन कमर्शियल इंटरेस्ट भी देखते हैं. अब वो बहुत से छोटे छोटी जगहों पर नहीं है, जहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन डेंसिटी है या जहाँ पर यूजर्स नहीं हैं, तो वहाँ ब्रिक एंड मोर्टार ब्रांच खोलने जाएंगे तो वायबल नहीं होगा. सो आपको कुछ ऐसे बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा कि लोगों तक बैंकिंग फैसिलिटी जाए, लेकिन जरूरी नहीं कि बैंक्स भी जाएं. मतलब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिक एंड मोर्टार ब्रांच जाए, पक्की बिल्डिंग बने. सो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, आपने देखा होगा मोबाइल बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू है, पेमेंट बैंक्स हैं. बहुत से इनिशिएटिव्स सरकारों ने लिए हैं पिछले 2 दशकों में, जिसके थ्रू ये ब्रिज किया गया इस गैप को. बट when you talk about this, you should also talk about certain challenges, right? You can talk about challenge pertaining to access of digital technology, कि पहले तो ये accessible नहीं है सबको. रियलिटी हमारे देश की डिजिटल डिवाइड भी है, कितने लोगों के पास है, और यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि इसका पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है. डेटा के थ्रू इंडिया में कितने सेलफोन कनेक्शंस हैं, इसका डेटा आपको मिल जाएगा इकोनॉमिक सर्वे वगैरह में. टॉक अबाउट दैट. उसके बाद इशू आता है कि लैंग्वेज का प्रॉब्लम, फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, ये सारी चुनौतियां हैं. लोगों का बिहेवियरल चेंज, वो भी एक इशू है, कि लोग बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं कि उनको अपने हाथ में कैश पैसा दिखे या सोना दिखे अपने मटकी में, तो उनको लगता है ये मेरा पैसा है. लेकिन एक एब्स्ट्रैक्ट इकोनॉमी है जिसमें डिजिट्स के रूप में आपको अपना सेविंग दिखाई दे रहा है, उनको उतना भरोसा नहीं होता है, इसलिए उसके लिए कन्विंस करना भी एक चैलेंज है. देन यू हैव टू टॉक अबाउट सर्टेन वे अहेड, कि किस तरह से आप उसको ठीक कर सकते हैं. आई मीन हाउ डू यू मेक. फिर साइबर क्राइम का भी एक इशू है. छोटे छोटे गांव में जो लोग हैं, बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि उनके साथ फ्रॉड हो जाता है. उनको कोई फोन करके कह देता है कि आपके अकाउंट में पैसा आया हुआ है, आप आधार बताइए, हम बैंक से बोल रहे हैं, आपको पैसा मिल जाएगा. उनको लगता है बैंक से कोई बोल रहा होगा, वो दे देते हैं, उनके अकाउंट से सारे पैसे निकल जाते हैं. तो ऐसा बहुत कॉमन है छोटे छोटे जगहों पर, और बहुत बार बड़े लोगों के साथ भी हो जाता है, जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं अर्बन स्पेस के. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स शुड कम इन योर आंसर briefly. So students, today we have tried to quickly brush through answer writing. In the next class I'll try to see if I can take up certain other topics which are categorically mentioned in the syllabus, but generally उन पर हम बात नहीं करते हैं, economy centric हो जाता है syllabus. So I'll try to take 3-4 sessions on topics related to Indian society, right? So whatever your feedback regarding today's session is there, you can write in the chat box, and some more topics if you want to me to take, आप चाहते हैं कि उनको cover किया जाए, you can also suggest, or anything else you want to discuss, you can also write in the chat box. Thank you so much. We'll meet again on Wednesday, probably on 17th.